काला थैला तो अभी भी होता है जब सैनिटरी नैपकिन्स बेचते हैं, वो इतना बड़ा न्यूज़पेपर बांधा जाता है, यू नो. सो आई फील लाइक इट्स अ रन दैट प्रमोट्स women's health and menstrual health. आपकी बॉडी कैसी है, आपका फिटनेस लेवल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है. I think this is a great way to draw attention to something like periods because fitness is such an important part. और अजीब, बहुत ही अजीब कमेंट्स भी आए. अगर आप बोल रहे हैं after having 2 children I saw a lot of weight gain and then I was like the only way to do it is to get out and do something about it. Plus, I think it's a great initiative, GoFloRun, जो 8 दिसंबर को हो रहा है. सबसे पहले तो नेहा जी वी ऑल लव योर एनर्जी. सो हाँ, मतलब आप लोग जिस तरह से रन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप लोगों को देख के इतनी एनर्जी. गो फ्लो रन, इसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को. जी. हम चाहते हैं कि आप अच्छे से डिस्क्राइब करें, लोगों को जागरूक करें इसके बारे में बताएं. सबसे पहले तो ये एक इनिशिएटिव है जो हमने शुरू किया है विद माय पार्टनर फॉर द इनिशिएटिव, दैट इज़ अनीता लोबो. वो यहाँ खड़ी हैं हमारे साथ एंड वो खुद एक एक्स रनर है, एथलीट. एंड आई फील आप एथलीट तो ज़िंदगी भर के लिए रह सकते हैं. यू जस्ट हैव टू फाइंड यू नो योर ओन सेल्फ एज योर कंपटीशन, या फिर आपको देखना है कि आप कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं. GoFloRun stands for 2 different and similar things. I mean, it's a run that promotes women's health and menstrual health. We are here to talk about, you know, बहुत कम हमें लगता है, अगर हम देखें भी बाहर देखें, the ratio for men is to women when they come out to exercise is comparatively low. It's an initiative to promote health. And more importantly, I think it comes from a place of self-love as well. मैंने खुद देखा है कि जब आप एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो यू नो इट द इफ़ेक्ट्स ऑन योर बॉडी कैन बी वेरी वेरी हार्श. एंड स्पेशली लाइक यू नो मैंने माँ बनने के बाद after having 2 children I saw a lot of weight gain and then I was like the only way to do it is to get out and do something about it. And it stands for a little bit of my journey as well, but a large part of it is that we want to talk about menstrual hygiene, we want to talk about menstrual health, we want more and more women to come out and take the lead from the front when it comes to looking after themselves, when it comes to fitness, and it's a combination of all that. और आज जो हमने किया था is we are a month away from the actual marathon and it's not a one time thing that we want to do. हम चाहते हैं कि हम ये और भी शहरों में लेकर जाएं. हम चाहते हैं that the awareness is spread across the country via you know media, via social media, via our friends. And today was a walk where all our friends supported us, and especially when you see you know people like Soha and Natasha and Yasmin who come forward, who are you know literally flag bearers of women's health. तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत लोग प्रोत्साहित होंगे और हमारी बस ये उम्मीद है कि धीरे धीरे करके हम इस रन को और भी बड़ा बनाएं. तो हाँ जी, आप क्या कहेंगे, आप सपोर्ट. वेरी लॉन्ग आंसर गाइज. आई एम होपिंग दैट द सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा जीतते हुए. It was great. हाँ, मैं भी ये ऐसी कोई रेस नहीं है लाइफ जहाँ पे मैं नहीं जीती हूँ. I'm just a नहीं, winner. ये नहीं, जहाँ पे ये नहीं जीती. ऐसी कोई रेस नहीं है जहाँ सोहा जी हारती हैं. तो आप बाकी आप अच्छा समझदार हैं तो आप GoFloRun. मैं एक्चुअली बहुत ही एक्साइटेड थी इस इनिशिएटिव में भाग लेने. और आई थिंक दैट a lot of people still feel कि जब menstrual cycles के बारे में, menstruation के बारे में बात करते हैं तो एक फैक्टर होता है और हम कम बात करते हैं. And I think that just drawing attention to it, normalizing periods, talking about various issues that come with getting your periods, not getting your periods, hormonal imbalances, whether to use sanitary towels versus tampons versus the cup. Just talk about issues that I think especially young women, girls, as mothers of young girls, you know, these are conversations that we're going to have with our children as well. एंड आई नो कि शायद इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कहाँ पे जाना चाहिए टू गेट इन्फॉर्मेशन. वो शायद अपने माँ बाप से डरते हैं या ऑकवर्ड फील करते हैं इन सब सवालों में पूछने में. सो आई फील लाइक टू टॉक अबाउट इट, टू नॉर्मलाइज इट, इट विल बी अ वेरी गुड थिंग. एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट वे टू ड्रॉ अटेंशन टू समथिंग लाइक पीरियड्स बिकॉज फिटनेस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. Fitness is such an important part of regulating your health, of being healthy.
एंड एज अ वुमन इन हर 40s मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हूँ, लेकिन उसके साथ भी मुझे पता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है. गोइंग फॉर अ वॉक और अ रन, आई फील सो हैप्पी आफ्टर दैट. I feel like I sleep better, my hormones are regulated, my heart is being conditioned, I'm a happier person, I'm able to contribute better to society. तो for so many reasons it's important to prioritize your health. और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे शायद women more अपने health को prioritize नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं काम में, खाना पकाने में, लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज़, और हम अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे रखते हैं. एंड आई थिंक व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, अगर आप अपने आप को आगे रखेंगे देन यू विल बी एबल टू लुक आफ्टर पीपल अराउंड यू इवन बेटर इफ़ यू आर हेल्थी. आप काफ़ी लोगों को आप ट्रेन करते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को आप ट्रेन करती हैं. तो कभी कोई ऐसा सवाल आपसे कोई पूछा है कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो आप किस तरह से उन्हें आंसर करते हैं? जो भी सवाल होता है, हर एक सवाल अलग होता है, तो डिपेंडिंग ऑन क्या सवाल पूछा जाता है उसका सही जवाब देना बहुत ज़रूरी है. तो बहुत सबसे फ्रीक्वेंट सवाल मुझे पूछा जाता है जब कोई नया आता है कि हाउ सून विल आई लूज वेट, हाउ सून विल आई गेट फिट. यू नो, वो कोई पिल नहीं है, मैजिक पिल जो आप लेते हो, और हर एक की बॉडी बहुत ही अलग होती है. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपका फिटनेस लेवल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, और उस पर वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मेरा हमेशा से ये है कि मैं लोगों को सिखाती हूँ अपने बॉडी के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं. और वेट लॉस एक बाय प्रोडक्ट होता है. ऑफकोर्स सबको वेट लूज़ करना है, मगर वेट लूज़ करने से ज़्यादा फिट होना बहुत ज़रूरी है, और फिट होके वेट लूज़ करना सबसे अच्छी बात है. पीरियड्स को लेके बहुत मिथ होता है कि आप यहाँ मत जाओ, आप ये मत करो, वो मत करो. तो आपके बचपन में, आप लोगों के बचपन में कभी ऐसा हुआ कि आपकी मदर ने कहा कि ये मत करो, वो मत करो, अगर आप ये करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है? फॉर एग्जाम्पल अचार को लेकर कहा जाता है, दही को लेकर कहा जाता है. आज भी जो लेडीज़ है उन्हें रोका जाता है, बंदिश होती है. तो भी आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ? क्या कहना चाहोगे जो आजकल के लोग आ रहे हैं, आजकल की बच्ची आ रही है? कभी कभी मैं खुद एक्सक्यूज बनाती हूँ कि आई हैव माई पीरियड, मैं जिम नहीं जाऊँगी. एंड माई ट्रेनर्स लाइक नो रबिश, यू शुड गो टू द जिम, यू शुड एक्सरसाइज. बट आई थिंक योर बॉडी विल टेल यू जब आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, एंड यू शुड लिसन टू योर बॉडी. इट गिव्स यू इंस्टिंक्ट्स. तो जब आपकी बॉडी आपको कहती है कि रेस्ट करो, बट समटाइम्स यू गो टू द जिम एंड यू फील मोर एनर्जी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप. मेरी माँ ने या मेरी फैमिली ने या मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा कुछ कहा नहीं कि आपको ये अलाउड नहीं है. ये आप कहानियाँ तो आप सुनती रहो. Gee, I mean, I don't think we've been raised like that, and that's why we are coming here and taking the lead from the front that we need to normalize it because it was normalized in our lives. But हाँ, अभी भी हम देखते हैं कि काला थैला तो अभी भी होता है. जब सैनिटरी नैपकिन्स बेचते हैं वो इतना बड़ा न्यूज़पेपर बांधा जाता है. So I feel like it needs to be normalized, and at the same time, like Soha said, and everybody experiences it differently. कहीं ये नहीं है कि किसी को दर्द हो रही है, किसी को नहीं दर्द हो रही है. It's very important to listen to your body, and I think अगर, sorry to interrupt you, I don't know when you will stop talking. No, that's fine. अगर आपको किसी से एडवाइस लेना है तो अपने डॉक्टर से लीजिए. आई फील के इंटरनेट से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से भी आपको बहुत एडवाइस मिलेगी, मगर आपको हेल्थ एडवाइस अगर किसी से चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से लीजिए. अभी मेरा सवाल नेहा मैम आपसे है. Oh no. तो कहानी जब एक जर्नी की जब कहानी शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले, अगर मैंने 2-3 मंथ पहले जाऊँ, आपने एक पिक्चर अपलोड किए थे रनिंग का, काफ़ी वायरल हुए, काफ़ी कमेंट्स भी आए होंगे. हाँ, मैंने नहीं अपलोड किए, उन्होंने खुद शूट करके खुद अपलोड कर दिए. हाँ, और अजीब, बहुत ही अजीब कमेंट्स भी आए. अगर आप बोल रहे शायद उन लोगों की ये एक प्रॉपर मैसेज गया होगा जब आप ये लॉन्च हो रहा है, ये सामने आ रही होगी इस बारे में. क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उसके रिलेटेड ही था ये कहानी? नहीं, वो मैं ऐसी भाग रही थी तो वो मीडिया वालों ने शूट कर लिया. उसके बाद आई थिंक एज फार एज द मीडिया इज कंसर्न, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं. बिकॉज इफ दे आर गोइंग टू स्पॉट समबडी रनिंग, उनका ठीक है, वो अपने पेज पे डाल रहे हैं. एंड आई एम रनिंग, सो आई एम फाइन, आई एम नॉट शाय ऑफ द कैमरा. बट उसके बाद आई हैव ऑल्सो सीन, वो मुझे क्या, वो हमारे जो ट्रेनर हैं, हमारे कोच, ही इज़ इंडिया नंबर 1 इन हिज कैटेगरी.
far as hurdles are concerned. He's world number 4 or 5 in his category. Such a respected person. उन्होंने उनको भी ट्रोल कर दिया, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था. एंड आई नो द वीडियो वेंट वायरल एंड ऑल्सो लाइक यू नो इट वाज अ लॉट अबाउट माई फिजिकल अपीयरेंस. तो किसी को दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पे कोई है जो सुबह उठ के फिटनेस पे काम कर रहा है, बट बॉडी में कितने फ्लॉज हैं, किस तरीके के आपकी रनिंग फॉर्म है, आपका कौन सा फेस कैसे ठीक लग रहा है, कौन मोटा लग रहा है, कौन पतला लग रहा है, कौन क्या थिंग्स दैट डोंट इवन अकर टू यू व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ रन एंड देन दे आर पॉइंटेड आउट इन लाइक 2500 कमेंट्स. बट मैंने पढ़े, उसके बाद 15-20 पढ़ने के बाद तो मैं भी थक ही गई थी बिकॉज आई वाज लाइक ये तो क्या ही हो रहा है. बट द इंटेंशन ऑफ दैट वीडियो एंड दिस इज नॉट रिलेटेड. आई स्टिल गेट अप एंड गो फॉर अ रन एवरी डे. अगर मुझे फिर से शूट कर लिया किसी ने रनिंग, नथिंग रॉन्ग विद इट एंड आई एम फाइन विद इट. उसके बाद काफ़ी लोगों ने भी काफ़ी सेलिब्रिटी के भी ऐसे रन के वीडियो काफ़ी अपलोड हुए, बट कहीं ना कहीं एक गुड मैसेज भी जाता है. जी एंड वी आर हियर टू सेंड आउट द राइट मैसेज. यस. सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने आप को? हम बस ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, दिस इज़ एन ऑल वुमेन्स रन and girls over the age of 14, please come and run, walk. It's 3 kilometers, it's 5 kilometers, 10 kilometers, it's a marathon. It's not a race. आपकी जो रेस है अपने आप के साथ है. एंड सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप प्रॉमिस यू आप कर सकते हैं. अभी भी 1 महीना है. आई मीन एंड one month is more than enough to come train and do this. Start right now. Please register, please sign up and see the amazing people who are here supporting us, and that's all that matters. And another thing is you can make it a thing with your friends. आपकी friends के साथ आप walk कर सकते हो, आपकी girlfriends के साथ chit chat कर सकते हो walk करते समय. तो it's like a community thing and it's really really important क्योंकि menstrual health हमारी country में बहुत, जैसे आप लोगों ने बोला, it's not looked at with positivity. तो ये हम लोग पॉजिटिविटी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी कीजिए. बस आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव GoFloRun जो 8 दिसंबर को हो रहा है, एंड आई वुड इनकरेज ऑल एज यू सेड गर्ल्स ओवर द एज ऑफ 14 टू पार्टिसिपेट. और अगर आप रन या वॉक नहीं करते हैं, बहुत ही ज़रूरी है. यू गेट विटामिन डी, इट मेक्स यू हैप्पी, यू इंक्रीज फ्रेंडशिप्स, यू वॉक टुगेदर. एंड आई थिंक मैं तो जिम जाती हूँ लेकिन फिर भी मैं वॉक करती हूँ, क्योंकि जिम जाने के बाद काफ़ी टाइम हम सोफे पे बैठे रहते हैं. एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट दोज 10,000 स्टेप्स इन. तो अगर सब के लिए मेरा ये एडवाइस है कि गेट दोज 10,000 स्टेप्स इन. हाउएवर, और अगर आपको लगता है कि सोहा जीत जाएगी, हम उसको बांध के रखेंगे. आपको चांस और अगर आपको लगता है कि सोहा जी के 10,000 स्टेप्स रोज नहीं होते, आई प्रॉमिस यू होते हैं. कई बार वो हमारे फ्लोर तक आ जाती है. हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, वो 9 माले पे और हम 12, और मैं भाग रही हूँ और नीचे. नहीं, वो कई बार बोलती है, घंटी बजा के बोलती है आई मिस्ड यू. मुझे नहीं लगता वो मुझे मिस कर रही थी, वो बस स्टेप्स कंप्लीट कर रही थी ऊपर नीचे ऊपर नीचे. जो चैलेंजिंग हम कर नहीं रहे हैं, बिकॉज हम एनकरेज करें कि वुमेन कहीं से तो चालू करो, क्योंकि मेन एम है टू प्रमोट फिटनेस एंड एट द सेम टाइम it can be a start for people who do not do anything in life, in the sense when it comes to fitness. Yes. So start now. Yeah. Even saying the word periods or saying the word menstruation is quite taboo in this country. Have you seen cases with people where people have been negligent about their menstrual health and that has led to severe issues? So which would make a case to why it's important to speak about it rather than hush things up. Yeah. So it's interesting that the most natural, physiological and wonderful thing in human life was so misunderstood, because of which it was stigmatized. So there's one word that we need to talk about, it's stigma, and what we are doing here today. Essentially you said that it's different for every woman. Yes. If you like to add a bit more to that, how menstruation is a different. Been on the road shooting, you go on long drives. I've done adventure-based reality shows that go over 3 months, and there's no way that you don't get your period at that time. And then it does get hard. Like I also feel that that what Doc was saying, that when you actually go into rural areas, I'm not saying that at least we have access to toilets, we have access to better living conditions, and we can make a difference. And I feel that for us to even experience that,
it becomes a story to tell. Whereas that's not the living conditions that women should actually be having or going through. What is our story to tell or a one-time experience is actually their life. Yes. And somehow, one way or the other, so whether it's being, associated with NGOs that support or runs like GoFloRun, where there is a trickle-down effect to make a change, I feel we should all do it. It starts with, signing up, contributing, having a voice, lending a voice, sharing whatever education you have, normalizing it. Everything is a contributor. So I feel like if anyone can, all of us sitting here can. Like you said, we need to normalize conversations about menstruation. Would you like to use this platform to speak about what your menstruation journey has been like since you were a child till the time you became a mother and host? I mean, it's also stepwise, right? We spoke about it, and I've also been raised by a mom where it was, or in a home where it was okay to have the conversation between her and me. But there's also my dad and my brother, and it's not like something that we have to sit in the living room and have that conversation. I have been raised in an environment which is a very modern, educated environment where still we were sitting on the side and having this conversation. And now, of course, I have a daughter, I have a son, and I want to make sure that there is education in both of them. Like Doc said, it's about starting education in time for what is appropriate at that point, and especially with my daughter, like totally normalize it, educate her. The scary statistic of like young girls getting their period early, Yes. that's another big sign, and we need to address it. So I mean, my journey or my period journey hasn't been different from maybe Anita's or yours or somebody else sitting over here, but it's definitely been different from women who don't have access or knowledge. How do you manage your low days on days maybe when you feel low or when your energy levels are actually low? Because we can't deny it does happen. I don't. How do you manage I'm different. I don't. I'm not like I don't take too many off days, and even my off days. One of my closest friends, Manmeet, is sitting here, who insists. We've known each other more than 20 years, and every like fourth day she'll message saying at least take an hour off. So my off days are also my on days. So I'm a different beast. Anita also knows me Yes. now. It's sometimes it's hard to keep track, but like I don't know, like I mean I'm the kind of person who normalizes pretty much everything. So yeah, this is definitely life, and nothing stops for me at least. Yeah, like there are days where I'm also like I don't want to do anything. Yeah, I mean on days But- when you just don't want to do anything. But then you feel even worse when you don't. So like like even Soha was here, she was saying when you finish that walk or finish that run or finish, doing what you set out to do, you just end up feeling better, and everything. And then there are happy hormones. So let's address that. And it's great to partner with someone like her. And great to partner with someone like Anita. Yeah, we're very different, and our common love for running is what has got us together.